गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिस्क इन इंडियाज़ एनबीएफसी सेक्टर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया के एनबीएफसीज़ की, क्योंकि जो ये एनबीएफसीज़ हैं इनका हैवी एक्सपोजर है पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर। तो एनबीएफसीज़ खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनीज़ हैं वो एक्सेसिवली रिलायंट हैं, कंसंट्रेशन उनका जो लोन्स का है वो पावर सेक्टर पर है। जो थ्री लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एनबीएफसीज़ हैं इंडिया की, 63% जो उनके लोन्स हैं वो सिर्फ पावर सेक्टर में ही हैं। 56% जो एनबीएफसीज़ हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है वो मार्केट इंस्ट्रूमेंट से होती है, तो उससे जो है वो लिक्विडिटी क्राइसिस को प्रोन रहते हैं। अनलाइक बैंक्स, एनबीएफसीज जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और वो उनको ये जो उनके फंड्स होते हैं वो इंश्योर्ड भी नहीं होते हैं। उनके पास आरबीआई की लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ का भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं फाइनेंशियल शॉक्स के। तो ये सब जो है आईएमएफ ने फाउंड किया है। तो आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है कि एनबीएफसी का जो डिस्ट्रेस है उसके कास्केडिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम पर इंडिया के, बिकॉज डीप इंटरलिंकेजेस हैं बैंक्स के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट्स के साथ। तो कोई भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अगर एनबीएफसीज में आता है तो उससे एम्पलीफाई हो जाएगा स्ट्रेस अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम। स्टेट ओन्ड एनबीएफसीज जो है वो डोमिनेट कर रही हैं सेक्टर को। थ्री गवर्नमेंट बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनीज हैं जो कि 1/3 ऑफ टोटल एनबीएफसी असेट्स को होल्ड करती हैं। अनलाइक प्राइवेट एनबीएफसीज, स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ जो है वो सब्जेक्टेड नहीं है लार्ज एक्सपोजर लिमिट्स को, जिससे कि रेगुलेटरी कंसर्न्स भी रेज हो रहे हैं। ठीक है। तो आईएमएफ ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं। कहा है कि एनबीएफसीज जो है उनको स्ट्रिक्टर उनके लिए लिक्विडिटी नॉर्म्स होने चाहिए ताकि एसेट लाइबिलिटी मिसमैच ना हो। आईएमएफ ने कहा है कि यूनिफॉर्म रेगुलेशंस होनी चाहिए स्टेट ओन्ड की भी, एनबीएफसीज की भी, और चाहे प्राइवेट एनबीएफसीज हों, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सके। रेगुलर मॉनिटरिंग करो एनबीएफसीज की लैंडिंग पैटर्न्स की, ताकि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स को इम्प्रूव किया जा सके और प्रिवेंट की जा सके फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शंस। एनबीएफसीज को अपने फंडिंग सोर्सेज को भी डाइवर्स करना ज़रूरी है। आईएमएफ ने एडवाइस किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बैलेंस करे डेवलपमेंट रोल ऑफ बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर? 80% जो एडल्ट्स हैं इंडिया में उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग नेटवर्क्स हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है इक्विटी मार्केट्स में राइज हो रहे हैं। तो इंडिया एक तरह से लार्जेस्ट ग्लोबल वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट्स है ऑप्शंस ट्रेडिंग की। तो आईएमएफ ने कहा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क आएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए जो है आपको बैलेंस करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट रोल ऑफ बैंक्स और एनबीएफसीज के। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपने सदर्न अफ्रीका ऑफिस को क्लोज कर दिया है बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एड कट्स शुरू कर दिए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक यूएन की एजेंसी है जो डील करती है हंगर इरेडिकेशन के साथ और प्रमोट करती है फूड सिक्योरिटी को इन द वर्ल्ड। ऑपरेट कर रही है मोर देन 120 कंट्रीज़ में, फंक्शन कर रही है इंडिया में सिंस 1963, और ये एक मेंबर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के भी। ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो फंडेड होती है वॉलंटरी डोनेशन से, चाहे वो गवर्नमेंट से हों, कॉरपोरेट से हों या प्राइवेट डोनर से हों। लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो इमरजेंसी के टाइम पर लाइव्स सेव करने में हेल्प करती है। तो ये एक रिपोर्ट भी रिलीज़ करती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, जो कि स्केल ऑफ एक्यूट हंगर को वर्ल्ड वाइड डिस्क्राइब करती है रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रैगन को पायलट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंट्रोड्यूस किया है न्यू वॉइस एक्टिवेटेड एआई असिस्टेंट जिसका नाम है ड्रैगन को पायलट। ये न्यू हेल्थ केयर एआई टूल है जो कि ऑफर किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर हेल्थ केयर। इसको डिज़ाइन किया गया है हेल्प करने के लिए डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए क्लिनिकल नोट्स और ड्राफ्ट पेपर वर्क, ताकि क्विकली सर्च हो सके इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेडिकल सोर्सेज। तो फीचर्स क्या हैं ड्रैगन को पायलट के? हार्नेस करता है नेचुरल लैंग्वेज वॉइस डिक्टेशन, और फाइन ट्यून किया गया है से यूजिंग जनरेटिव एआई, और ताकि अडेप्ट हो सके अडेप्ट कर सके हेल्थ केयर सेफगार्ड्स को। इसको जो है वो ड्राफ्ट करने के लिए मेमोज और नोट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। क्लिनिशियंस जो है उनको अलाउ करेगा ये जनरल पर्पस मेडिकल इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज।
एक्सेसिबल रहेगा ये थ्रू मोबाइल ऐप, ब्राउज़र या फिर डेस्कटॉप, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोंड ट्राइब्स। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने रिसेंटली रिस्पांस मांगा है एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, क्योंकि 95 फैमिलीज़ जो हैं राजगोंड ट्राइब्स की, उन्होंने हाई कोर्ट की डायरेक्शंस मांगी हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दिलवाने के लिए हाउस होल्ड्स को। तो गोंड ट्राइब या गोंदी ट्राइब द्रविडियन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये इंडिया के। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में मेजरली पाए जाते हैं। इनको हम 4 ट्राइब्स में डिवाइड करते हैं: राज गोंड्स, माडिया गोंड्स, धुर्वे गोंड्स और खतुलवार गोंड्स। गोंड्स जो है वो गोंडवाना रीजन में 9th और 13th सेंचुरी में जो है वो सेटल हुए। कई तरह के इन्होंने फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, टैंक्स और लेक्स बनाए गोंड डायनेस्टी के टाइम पर। गोंडवाना किंगडम सर्वाइव किया टिल लेट 16th सेंचुरी। इनके हम जो है डायनेस्टीज़ को 4 किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हैं: गाड़ामंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला, ठीक है, जो कि सेंट्रल इंडिया में रूल करती थी। इन्होंने कंट्रोल किया मालवा रीजन को भी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, और ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स भी इन्होंने जो है वो कई तरह की बैटल्स ब्रिटिश से लड़ी हैं। मेजॉरिटी ऑफ गोंड पीपल जो है वो गोंडी डायलेक्ट को बोलते हैं, जो कि द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है लैंग्वेज। और ये जो इनकी इकोनॉमी है वो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर बेस्ड है, लेकिन ये एनिमल हस्बेंड्री भी प्रैक्टिस करते हैं। और इनके जो गॉड हैं या रिलीजन है, ये क्लैन और विलेज गॉड्स हैं। एंसेस्टर वर्शिप भी करते हैं। केसलापुर यात्रा या मदाई इनके इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, और ये हिंदू फेस्टिवल दशहरा को भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माजुली आइलैंड। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली 6 डेज सर्वे कंडक्ट किया गया है, जिसमें हमें पता लगा है एस्केलेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट मजुली रिवर आइलैंड में, असम में। तो मजुली आइलैंड को हम सोल ऑफ असम भी कहते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। इसको फॉर्म होता है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर से साउथ में, खेर खेरकुटिया शूटी जो कि एक ब्रह्मपुत्रा की ही ब्रांच है, फिर सुबनसिरी रिवर से नॉर्थ में। ये 2016 में पहला आइलैंड बना जिसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया इंडिया में। आइलैंड जो है ये हब है असामीज़ नियो वैष्णवाइट कल्चर का। 17 ट्रेडिशन आपको पता होगा। तो जो ग्रेट असामीज़ सेंट रिफॉर्मर थे श्रीमंत शंकर देवा और उनके डिसाइपल माधव देवा, 16th सेंचुरी में उन्होंने 17 ट्रेडिशन बनाया। मोस्ट ऑफ द आइलैंडर्स जो हैं वो 3 ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं: मिशिंग, देवरी और सोनोवाल खाचरी। ओके। तो 17 और वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज़ के अलावा मजुली जो है वो मास्क मेकिंग के लिए फेमस है, और ट्रेडिशन ऑफ पॉटरी मेकिंग के लिए भी फेमस है। तो राइस कल्टीवेशन यहाँ का प्राइमरी लाइवलीहुड है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माउंट एरेबस। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंटार्कटिका के माउंट एरेबस के नीचे वॉल्केनिक जो आइस केव्स हैं उसके नीचे माइक्रोबियल लाइफ के जो है वो सीक्रेट्स हमें पता लगे हैं। तो माउंट एरेबस जो है वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। लोकेटेड है ये वेस्टर्न हाफ ऑफ रॉस आइलैंड में ऑफ द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका। ग्लेशिएटेड इंट्राप्लेट स्ट्रेटो वॉल्केनो है ये। वन ऑफ द फ्यू वॉल्केनोज है वर्ल्ड के जो जहाँ पर अभी भी एक्टिव लावा लेक है। कॉन्टिन्यूसली एक्टिव है ये सिंस 1972। तो लार्जेस्ट अंटार्कटिक सेटलमेंट मैकोमोडो स्टेशन जो कि ऑपरेटेड बाय यूएस है, वो भी इसी वॉल्केनो के बिल्कुल पास में ही है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉलगार्ड 3। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक इंक्रीज डिमांड देखी गई है पंजाब में बॉलगार्ड 3 की, अहेड ऑफ कॉटन सोइंग सीजन। तो बॉलगार्ड 3 एक पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम कॉटन वैरायटी है, जिसको डेवलप किया गया है मॉन्सेंटो ने, जो कि एक यूएस मल्टीनेशनल कंपनी है। सीड बनाती है ऑफ कोर्स। तो 3 BT प्रोटीन्स इसमें होते हैं जो कि इंसेक्ट की डेथ कर देते हैं, बिकॉज उनके नॉर्मल गट फंक्शन को ये डिसरप्ट कर देते हैं। तो ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव है अगेंस्ट पेस्ट्स लाइक पिंक बॉलवॉर्म। मॉन्सेंटो ने जो है बॉलगार्ड 1 और 2 बनाया 2002 और 2006 में रिस्पेक्टिवली। जो दूसरा वाला है वो अभी तक प्रेवेलेंट है, लेकिन ये जो है कुछ पेस्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं कैरी करते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉलगार्ड 3। तो पंजाब में कुछ वाइट फ्लाई और पिंक बॉलवॉर्म के जो है अटैक्स हुए पेस्ट्स के पिछले कुछ सालों में, तो उसके लिए ही जो है बॉलगार्ड 3 की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो ये बीटी क्या होता है? बीटी एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि जिसके में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी का ही इस्तेमाल करके जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है कॉटन को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टॉरस
KEPD 350 टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वीडन ने एक की स्टेप लिया है अपनी एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। टॉरस KEPD 350 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को सिलेक्ट किया है अपने ग्रिपन फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये टॉरस जो है ये एक मॉड्यूलर एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड क्रूज मिसाइल है। इसको डिज़ाइन किया गया है टॉरस सिस्टम्स द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर है जर्मनी की एमबीडीए का और स्वीडन के साब बोफर्स का। ठीक है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है हार्ड और डीपली बरिड स्टेशनरी सेमी स्टेशनरी मिलिट्री टारगेट्स को ऑन द ग्राउंड। मिसाइल जो है 2005 से ऑपरेशनल है और इसको जर्मनी, स्पेन, साउथ कोरिया और बाकी और कई तरह की कंट्रीज़ जो है वो ऑपरेट करती हैं या यूज़ करती हैं। इसके फीचर्स अगर हम देखें तो 500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। पावर्ड है ये बाय अ टर्बो फैन इंजन। मिसाइल जो है वो मेड है मॉड्यूलर सेक्शन से। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी इसके मॉड्यूलर हैं। सूटेबल है ये डे और नाइट और ऑल वेदर डिप्लॉयमेंट के लिए भी। ओके, तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, टीआरएन और इंफ्रारेड सीकर बेस्ड सेंसर्स हैं इसमें, जो इसका ट्राईटेक नेविगेशन सिस्टम को पावर करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is risk in India's NBFC sector. This topic is important for your economy section. So International Monetary Fund has recently published a report which is titled India Financial System Stability Assessment. Through this report, IMF has expressed concerns regarding financial stability of India's non-banking financial companies because of their heavy exposure to power and infrastructure sectors. So NBFCs, particularly which are in the infrastructure financing companies, they have excessive concentration of their loans in the power sector, which has been historically plagued by structural inefficiencies in India. Okay, we can see that how the states are performing in India with respect to the power sector. The three largest infrastructure financing NBFCs accounted for almost 63% of the power sector loans in the financial year 2024, which was much higher than as compared to 2020. So 56% of NBFC's lending is financed through the market instruments, making them very susceptible to liquidity crisis in case of volatility in markets. So bank borrowings, reliance on bank borrowing is also increased, which is raising systematic risk. So unlike banks, NBFCs do not have the power to accept demand deposits, and their funds are not insured as well. They also lack direct access to RBI's liquidity facilities, which make them more vulnerable to financial shocks as compared to the banks. IMF report is warning that NBFC distress could have cascading effects across the financial system due to their deep interlinkages with banks, mutual funds, or corporate bond markets. So, this spillover effect can also hamper or harm the banking sector, and this could create liquidity crisis in mutual funds and bond markets as well, like we saw in the ILFS and DHFL collapses in the past. State owned NBFCs dominate this sector. So, three government backed infrastructure financing companies who are holding one third of the total NBFC assets as of now. And there is also this fact that unlike private NBFCs, state-owned entities are not subjected to large exposure limits. Okay, so this is a mismatch here that you are regulating the private NBFCs more than the state-owned entities. So that's why IMF has recommended that NBFCs, particularly those which have significant infrastructure exposure, should comply with stricter liquidity norms so as to avoid asset liability mismatch. IMF is also calling for uniform regulations for state owned and private NBFCs so as to create a level playing field. Um, Regular monitoring of NBFC's lending patterns also need to be made so as to improve risk management frameworks, and so as to prevent financial disruptions. NBFCs should also diversify funding sources to reduce their dependence on market instruments and bank borrowings. IMF also advises that Indian government should balance financial stability with the developmental role of banks and NBFCs. So 80% of what is the impact on India's financial ecosystem? So 80% of adults in India have financial accounts, which are driven by the expansion of banking networks and digital payment systems like UPI. So the rise of retail investors in equity markets has made India one of the largest global markets for options trading. However, IMF is stressing that financial stability risks must be managed proactively to sustain economic growth. Okay.
So the next topic is World Food Program. This topic is important for your international relations. So UN's World Food Program is closing its Southern Africa office in the wake of Trump administration's aid cuts. So what is World Food Program? It is a UN agency which deals with hunger eradication and promotes food security in the world. It is operating in more than 120 countries. It has been functioning in India since 1963. It is also a member of the United Nations Development Program. It is funded by voluntary donations from governments, corporates, and private donors. It is the largest humanitarian agency which is saving lives in emergencies, and it is using its assistance to help communities become self-sufficient and resilient to shocks. It also releases the report called the Global Report on Food Crisis, which describes the scale of acute hunger in the world. Okay. So the next topic is Dragon Copilot. This topic is important for your science and tech and your social issues section. So Microsoft has recently introduced a new voice activated AI assistant called Dragon Copilot. This is the new healthcare AI tool which is being offered as part of the Microsoft Cloud for Healthcare. It is designed to help doctors and healthcare professionals transcribe their clinical notes and draft paperwork, as well as quickly search for information from medical sources. So it harnesses the natural language voice dictation technology and ambient listening technology as well. These capabilities have been further fine-tuned using generative AI so as to adapt the healthcare safeguards. So it can also be used to draft memos and notes in a personalized style and format. Apart from documentation work, AI Assistant also allows clinicians to search for general purpose medical information from trusted sources. It can be accessible through a mobile app, browser, or desktop. So the next topic is Gond tribes. This topic is important for your social issues. So Gujarat High Court has recently sought a response from a power distribution company, um, the Ahmedabad district collector and a residential society, after 95 families of the Rajgond tribe sought HC direction or High Court direction for electricity connections to their households. So what is Gond tribe? The Gond or Gondi is a Dravidian ethno-linguistic group. They are one of the largest tribal groups in India. According to the 2011 census, their population was about 11 million. The states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, and Odisha are home to the largest Gond population. The Gonds are mainly divided into four tribes, namely Raj Gond, Madhya Gonds, Dhurbe Gonds, and Khatulwar Gonds. Were settled in the Gondwana region in 9th and 13th century AD. They built a number of forts, palaces, temples, tanks, and lakes. Of course, they ruled several parts of central India. So Gondwana kingdom survived till the late 16th century. Their dynasty can be uh, their dynasty can be divided into four kingdoms: Gadbandala, Deoghad, Chanda, and Kerala. Okay, they all ruled in central India. They also gained control over Malwa region after the decline of the Mughals. And during the British also, they challenged them in several battles. Majority of the Gond people speak dialects of Gondi, which is an unwritten language of the Dravidian language family. The basis of the Gond economy is agriculture, but they also practice animal husbandry. The religion of the Gond tribes centers on clan and village gods, together with ancestor worship. So Keslapur, Jatra, and Madai are important festivals of the Gonds. Okay. So the next topic is Majuli Island. This topic is important for your environment section. So a recent 6-day survey conducted on the escalating human-wildlife conflict in the River Island district of Assam has sparked certain concerns. So Majuli Island is often called the soul of Assam. It is the world's largest river island. It lies at the heart of Assam. The island is formed by Brahmaputra River in the south, the Kherkotia Shuti, which is an anno branch of Brahmaputra, and Subansiri River in the south. In 2016, it became the first island to be made a district in India. This island has also been a hub of Assamese Neo-Vaishnavite culture, initiated around the 16th century by the great Assamese saint reformer Srimant Shankar Deva, along with his disciple Madhav Deva. So they initiated the tradition of satras. Okay, uh,
Most of the islanders, they belong to the three tribes Mishing, Deori, and Sonowal Kachari, with non-tribal Assamese comprising the rest. Okay, apart from Satras and the Vaishnavite monasteries, Majuli is also famous for mask making, and it has a tradition of pottery making as well. So rice cultivation is the primary livelihood for the residents of Majuli, along with uh, several unique varieties of rice available here, Komal Sol and Baudhan growing in this region. Okay. So the next topic is Mount Erebus. This topic is important for your environment section. So beneath Antarctica's Mount Erebus, there is a hidden world of volcanic ice caves, thriving microbial life. So this also offers us a glimpse on how life could exist on alien worlds. So Mount Erebus is the world's southernmost active volcano. It is located on the western half of the Ross Island off the coast of Antarctica. It is a glaciated intraplate stratovolcano, and it is part of the Ring of Fire, which encircles the Pacific Ocean basin. It is also one of the few volcanoes in the world which contain an active lava lake. It has been continuously active since 1972, and most eruptions are small and strombolian in character, tossing bombs onto the crater rim. Okay. So the largest Antarctic settlement, called the McMurdo Station, which is operated by the US, stands within the site of this volcano as well. So the next topic is ball guard 3. This topic is important for your environment section. So recently there has been an increasing demand for ball guard 3 in Punjab ahead of the cotton sowing season. So ball guard 3 is a pest resistant genetically modified cotton variety which was developed by Monsanto more than a decade ago, and it has shown remarkable resistance to pests. It contains 3 Bt proteins which can cause insect deaths by disrupting their normal gut function. Farmers are demanding the introduction of Bolgard 3, which is particularly effective against pests like pink bollworm, Bolgard 1, and Bolgard 2, which were developed by Monsanto and introduced in India in 2002 and 2006, respectively, remains prevalent today. But they are not effective against the whitefly and the pink bollworm, which arrived in Punjab in the last few years. So, what is BT? BT is the Bacillus thuringiensis, which is a soil-dwelling bacterium, which is having potential insecticidal properties, and it is used through genetic modification and introduced in the cotton seeds so as to make them resistant to pests. Okay. So the next topic is Taurus KEPD 350. This topic is important for your security section. So Sweden has taken a key step in strengthening its Air Force long-range strike capabilities by selecting the Taurus KEPD 350 air-launched cruise missile for integration with their Gripen fighter jets. So this Taurus is a modular air-launched long-range precision guided cruise missile designed and produced by Taurus Systems. It is a joint venture between Germany's MBDA and Sweden's Saab Bofors Dynamics. It can penetrate through dense air defense systems and destroy the hard and deeply buried stationary and semi-stationary military targets on ground. This missile entered operational service in 2005. It is used by air forces in Germany, Spain, and South Korea, among others. It has a range of more than 500 kilometers. It is powered by a turbofan engine. This missile is made up of modular sections. Its electronic systems are also modular. It is suitable for both day and night as well as all weather deployment. So it has a tri-tech navigation system which combines data from inertial navigation system, GPS, terrain reference navigation, and infrared seeker. Okay, infrared seeker based image based navigation sensors. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.